A very warm and respectful welcome to all dignitaries, speakers, faculty members, and dear students present here today. Today's program marks significant milestone in our academic journey, and it gives me immense pride to welcome you all to this special occasion. Before we move ahead, I would like to briefly take you through the inspiring journey of Chanakya, a journey rooted in vision, discipline, and continuous transformation. In 1993, Chanakya began its journey as a vocational institute focusing on skill-based education. In 1994, it became the first English medium college in Raipur, setting a new benchmark in education. In 1998, Chanakya introduced the EOEACC computer program, recognizing the importance of technology at early stage. In 2010, it became the first community college strengthening industry-oriented learning. In 2016, Chanakya partnered with BrainX USA, bringing global exposure and collaboration. In 2018, the institution received National Recognition Awards for Excellence in Education. In 2019, the foundation of school and Kusoka was laid, expanding multidisciplinary education. In 2025, Chanakya received AICTE approval, including approval of AI department. In 2026, Chanakya proudly enters a new era with the launch of specialized and dedicated Department of Artificial Intelligence. This journey reflects not just growth for foresight, the ability to prepare students for the future before the future arrives. This remarkable journey has been shaped by leadership of visionary educationists and a disciplined leader. It is my proud privilege to introduce the founder of Chanakya, a former Wing Commander Subhash Sindhwani sir. He is an Indian Air Force, a guiding force behind every milestone of institution. Dr. Wing Commander Subhash Sindhwani sir. Sir's vision has continuously aligned education with national and global needs, and today's focus on AI is a reflection of that foresight. I now respectfully invite sir to take the stage and we proceed. Okay, maybe the first one. Good morning. Good morning. It's my real pleasure to welcome you. I enjoy talking to people. I enjoy hearing them. I enjoy interacting with them. And that's the pleasure. I learn so much from all of you. And I think I will begin with one small. I'm 76. Only 76. A lot of my friends would want me to retire. My children, my wife, everybody would want me to retire. But he retired today. Because you should have a zeal to live. You should have a zeal to live. And you should be learning all the time. Learning all the time. The life cannot come to an end. Can we, there's too much of life coming on. Is it feasible to put that off? Can you? People can come from the other side. So, if I could just pass on, one of my attributes to you would be don't give up. I failed many times in life. I can't tell you how many times I failed because but that's failed many times, but the failure is not enough. Failure is only an opportunity to I want the lights off. I want the lights off. I want because my slides will not be seen. Put the lights off. And now you can put my slides off. So with that element of interaction, and believe me, you can ask me any question. मैं स्टूडेंट हूँ आप लोगों के साथ जो जिसने अभी तक पढ़ना नहीं छोड़ा, सीखना नहीं छोड़ा, अभी तक सीखता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, तो मेरे को मजा आता है बच्चों से मिलकर, स्टूडेंट से मिलकर। स्टूडेंट कम्युनिटी जो है ना वो इतनी फोर्सफुल कम्युनिटी है और वही होप है। इंडिया में बुढ़े लोग कुछ नहीं कर सकते,
If anything can happen in this country, it's to you young people. अभी मैं गया था ASM दिल्ली में और वहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चे, young people with hopes in their lives. I mean, I felt India is blessed to have such kind of population, such kind of young people. And ask questions. Don't accept things. Ask questions. It's only the thing of asking questions can help us progress. So, yeah. Are the slides on? Okay, next. Now, this workshop, Akansha told you something about Chanakya Academy, and which we raised in 1993. And now we are raising Future Stack AI Foundation. This is also a non-profit. We intend to make non-profit. We intend to actually serve the society. Whatever we collect should go back to society in terms of new research, in terms of new jobs. And in this workshop we have 6 people addressing you. Garima is already addressed you. Garima Prashad, the manager of sales for Delhi. So we have a guy from Mumbai. He is running a company. जिंदगी है आपके समाज की कंपनी को जैसे आप चलाना चाहते हैं चलाते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और राहुल रंजन भी यहीं के जो कि अटलांटा में यूएस में ये ऑल्सो रहा इसे मायने नहीं है। एक एआई में ये कोई क्या इंजीनियर है क्या नहीं है, टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है, एवरीबॉडी हैज अ रोल टू प्ले, एवरीबॉडी हैज अ रोल टू प्ले। Dr. Wasim, I'm sorry, Wasim, your spelling is wrong, I'm sorry, who committed a mistake. Dr. Wasim is a PhD in AI from China, and he is a very, very highly qualified person. He is leading our AI department. He is the head of the AI department in Chanakya. So we are in touch with him. We are building a team, but to begin with, somebody has to be outside to bring people. Sushma? Yes. Somebody has to be outside to bring people through this case. Okay, and then poor me. You know, I've been struggling hard for the last 76 years. अभी कुछ हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हो जाएगी। ठीक है? आवाज आ रही? You are happy with me? I'm not a boring lecturer. I'll keep you, give you reasons to smile, make you do a couple of, exercises on AI so that you remain right. Can I get a second? Yeah, second one, next. So I thought that I should begin with, my own personal journey. कि मेरे को AI का शौक कैसे चला? Why did I get into AI? One of the reasons was कि मेरा बेटा works in DeepMind. Google DeepMind नाम सुना है? Google DeepMind नाम सुना है? Google DeepMind वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, वो सिर्फ AI पे काम करते हैं, रोबोटिक्स पे काम करते हैं। सुंदर पिचाई may be the CEO of Google, but DeepMind के पास 100 ऐसे रिसर्चर हैं जो सिर्फ AI पे रिसर्च करते हैं। और डेमिस हेसेबिस उसके CEO हैं। 4 साल की उम्र से वो चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे एट 4, एंड उनके ऊपर पूरी एक यूट्यूब में एक स्टोरी है, जो सी स्टोरी, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, द थिंकिंग गेम। कभी टाइम मिलेगा तो उसको देखना कि कैसे उस कंपनी ने DeepMind ने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की। तो मेरे बेटे से मैं और मेरा ग्रैंडसन भी बहुत एनेमर्ड कि क्या करता रहता है, जनरल रिसर्च करता रहता है, व्हाट इज ही डूइंग। So then we started looking at him. We went to Google many times, saw the lab there, the robotics were working very hard. So we realized there is something very interesting happening in this field. So now, first of all, अगर आपको पैसा तो सब कमा लेंगे, जॉब जिंदगी समझ और कितनी डिफिकल्ट अलग अलग कितने मैसेजेस हैं, अलग अलग
ट्रम्प पापा नहीं है, हमेशा लड़ते रहते हैं, सुन नहीं रहे हैं बोल सकता। तो you have to understand that, and I actually felt कि see internet can AI can read everything in the net, वो सारे वेबसाइट पढ़ लेगा, सारे जितना भी मटेरियल अवेलेबल है वो पढ़ लेगा। मैं और आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। We cannot think, our minds are limited, finite intelligence, finite memory, छोटी memory. So I found that AI gave you a very large intellect and a very large memory size. You can at one go see what is all across that. So मैं बहुत सारे complex problems हैं philosophy के, Indian philosophy के, Western philosophy के, so I was trying to take the help of AI. And AI, actually, I would think कि उसमें मेरा मेजर रॉल है तो मैं रिजनेबल बिल्कुल है। मैंने बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी, बहुत सारे बिजनेस रिपोर्ट तैयार किए, बहुत सारे एडवाइस। एक बार मैंने AI को बोला कि कैन यू राइट ए रिट पिटीशन फॉर मी। रिट पिटीशन अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो यू हैव टू फाइल ए रिट पिटीशन। तो मैंने AI को बोला यार कैन यू, मेरे को लगा कि AI can help many people in understanding the legal problem. आपको अपना legal problem क्या है, उसकी क्या implication है, आपको वकील बताएगा वही हम जानते हैं। But here is the truth, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, वो आपको सारा legal जो है कंसल्टेशन आपको देगा। पर उसने मुझसे कहा कि लोग मैं इंडिया में भी AI को ड्राफ्ट नहीं कर, मैंने रिट पिटीशन ड्राफ्ट नहीं कर सकता हूँ, आप बेहतर है कोई लॉयर से कंसल्ट करें। और उसने मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन दी, मुझे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस इन USA, पॉलिसी इश्यूज, आई रोट पोएम्स, मैंने पोएम लिखी है, उसके बाद मैंने AI को दे दिया था, उसको रिफाइन कर दिया, इसको बोला कि यार तो इसका म्यूजिक भी डाल दे और कोई सी अच्छी सी वॉइस भी डाल दे। सो इट रोट ब्यूटीफुल पोएम्स। इट्स अमेजिंग व्हाट AI कैन डू, इट्स रियली फैंटास्टिक, इट्स सो absorbing। मैं कहता हूँ सबसे कि यहाँ जाने के बाद में कम से कम 1 घंटा रोज स्पेंड होने का। AI क्या कर सकता है? AI should become your friend, AI should become your assistant. Choose AI to the extent that you can. Only when you start using it, then you will realize what AI can do. मेरे बोलने से नहीं होगा, लेकिन AI क्या कर सकता है? Only when you sit and when you start doing it yourself. बिना किए आप नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। So you have to get into it and don't be scared of it. मैं देखता हूँ बहुत से लोग कंप्यूटर में जाने के बाद डरते हैं, घबराते हैं, तो AI के साथ कुछ ऐसे ही है। Don't get scared, go see, experiment, find out. This takes very less time. It doesn't cost. The cost is very low. Subscription भी आने वाला है, अभी तक तो काफी ज़्यादा तो फ्री था, अभी सब्सक्रिप्शन आने वाला, तो फिर भी अभी भी बहुत था। For me, AI became a source of knowledge, joy, and self-empowerment. मेरे को लाइफ में यही चाहिए था। I want to be a happy man. जब मेरे को confusion है तो कोई बाबा हो लो, I don't want to go to any guru. No guru, no saint, no guru. Even they all are selling their own products. So no guru. No guru means no guru. But here is an AI, it picks up from everybody information. न्यूट्रल हो और नीचे लिख भी देता है कि भाई मेरा परफेक्ट नहीं हूँ, यू शुड बी एबल टू जज मी। और AI के साथ एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप उसको थम्स अप या थम्स डाउन दो। थम्स अप जब आपको लगा कि अच्छा कर रहा है तो थम्स अप दे दो। तो AI लर्न्स, AI इज अ लर्निंग मॉडल, AI इज अ थिंकिंग मॉडल, AI इज अ रीजनिंग मॉडल। AI is going to change the whole world. I can absolutely, I have no doubts now. Okay, next one. Okay, me and my grandson started learning AI together. So this fellow, he pictured himself as a nice scene. So, just a fun. Next one. Now, my talk is actually designed in a way to introduce AI. और हमारे में एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वसीम, वो आपको इस बेसिक टूल्स पर लेके जाएंगे। मैं जैसे आपको आपके अंदर AI का
are missing something from it. This is the biggest technological breakthrough in the world. Biggest. अगर इससे कोई बड़ा मॉडल नहीं कर सकता। तो AI के एवोल्यूशन में भी ये ऐसे टू कोलैबोरेटर है। Traditional food is two. AI evolves from a tool to digital dialogue. Will you get come in? तो AI के टू कोलैबोरेटर आपका वो आपको हेल्प करता है, सहायता करता है, आपका कोलैबोरेटर आपको बताता है कि क्या कर सकते हैं करके। फिर एक AI में आप एक एजेंट को डेवलप कर सकते हैं। अब एजेंट जो है वो एक्शन लेगा। एक तरीके से आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे थे, नॉलेज गेन कर रहे थे। नाउ यू कैन क्रिएट AI एंड AI विल टेक एक्शन। फॉर एग्जांपल छुट्टी बनानी है, कहाँ जाना है, रिजर्वेशन एजेंट कर देगा। बुकिंग करनी है, रिजर्वेशन AI कर देगा। आपका स्टॉक गिर गया है, किसी और एजेंट कर देगा। तो एजेंट कैन टेक ओवर मेनी ऑफ योर बोरिंग फंक्शन। वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा। और वन ऑफ माय फ्रेंड वाज टेलिंग मी कि ऐसा प्रोग्राम डेवलप हुआ AI उसके 16 एजेंट के साथ में, जिसको प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सैकड़ों हजारों इंजीनियर लगे और महीनों और साल। तो AI can work very fast. It has the ability to work very fast. If you're not using AI, it's like saying कि मैं तो कार नहीं चलाऊंगा या मैं हेल्प नहीं दूंगा। तो AI has to be has to go into your own self. Then you have self-verification. Now AI can self-verify itself also. AI can also see मैं सही में नहीं हूँ। AI can question and he can do self-verification. उसके बाद अपनी मेमोरी है। अब बहुत सारे ओपन सोर्स फाउंडेशन मॉडल हैं। पता नहीं आप लोगों ने कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल में है जिसको आप जानते हैं। खैर कोई AI का बड़ा सॉफ्टवेयर किया चैट एवरीबडी इज वर्क चैट जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग चैट जानते हैं? माय गुडनेस, दैट्स गुड, दैट्स अ गुड नंबर। वो ChatGPT कैन डू एनीथिंग, बट अब ChatGPT को छोड़ के सैकड़ों मॉडल आ गए। इतने मॉडल आ गए हैं कि ये समझना डिफिकल्ट। और अब एक सिंगल एजेंसी आ गई जो सब मॉडल के सब्सक्रिप्शन को भी बेचती है कि कब कौन सा मॉडल यूज करना है, ये शायद दुनिया इतनी अच्छी इतनी आसान कभी नहीं थी। मैं दुनिया के हिस्ट्री को आई कैन गो बैक टू नॉट 5000 years which is Hindu civilization. I can go back to 60,000 years back. मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग कभी नहीं। अब AI क्वांटम कंप्यूटर, I don't know how many of you quantum physics, quantum mechanics have you heard? You heard? What is it? जो से बड़े बड़े Yes, yes. You can give the mic. I just know the basic stuff about it. I can't really explain what it is, but I know it exists and like it's a main thing how world works or science works. Yeah, thank you. Quantum physics by the way, आइंस्टीन को छोड़ के शायद देखा जाके समझता है, कोई नहीं समझता। मैंने बहुत कोशिश की फिर कोई समझ नहीं। Now quantum physics is something like this. अगर मान लीजिए दो entangled particles, दो entangled जो जुड़े उनको आप लाखों मील दूर छोड़ दो, अगर आप एक को चेंज करोगे दूसरा ऑटोमेटिक चेंज होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो इंडियन फिलॉसफी है कॉन्शियसनेस और वेदांता लड़के मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट साइंस फिजिक्स ये कहता है नाउ कि अगर आप पार्टिकल को मैटर को बहुत ही फाइन तरीके से तोड़ दो और उसमें आप इंटेग्रल करो तो कितने भी दूर क्यों ना हो वो दोनों आपस में कनेक्ट है। एक को चेंज करो दूसरे को नेक्स्ट। तो इसके पहले बात नाउ AI across life journey, यहाँ पे स्टूडेंट में एजुकेशन में क्या हेल्प कर सकता है? पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग, माय गुडनेस।
क्लास में जाते हो तो समझ में नहीं आता है, शर्म लगती है पूछने में, बाकी जैसे समझ के आपको समझ में नहीं है, तो यू लर्न यू लिव विद दैट लिमिटेशन, आपको समझ में नहीं आए, आपकी हिम्मत ही नहीं है पूछने, क्योंकि एक ही चीज़ है सब कुछ। अब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। सो नाउ यू कैन हैव पर्सनल ट्यूटर, एक पर्सनल ट्यूटर है, आप उसे पूछ सकते हो और वो आपको जवाब देगा। होमवर्क, हेल्थ, कैरियर गाइडेंस, धीरज दिया। तो अभी धीरज लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एआई टूल डेवलप किया, इसमें आईएएस आईपीएस का एग्जाम देने को हेल्प सारे उसका बॉस रहता है अटलांटा में भूपेश, ये लोग होता है। कैरियर में रिज्यूम बिल्डिंग एंड जॉब मैचिंग, स्किल डेवलपमेंट, कोडिंग लैंग्वेज, वर्क प्लेस एंड। अच्छा, कितने लोगों का आप लोगों के पास फोन है? जस्ट आस्क चैटजीपीटी के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरे को प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज में, मैं कैसे रिज्यूम करूँ? आस्क चैटजीपीटी, how should I write my resume if I'm applying for a job in a college? You know, can you also, only 2 minutes, not more than that, otherwise see, am I looking fine? So just take 2-3 minutes. It can tell you how to write resume. जॉब लेने के लिए resume सबसे पहला स्टेप, जब तक resume नहीं ठीक से नहीं लिखोगे तो जॉब नहीं मिलेगा। और रिज्यूम में क्या लिखोगे? ये आपको चैटजीपीटी सजेस्ट कर सकता है कि मैं रिज्यूम कैसे बनाऊं। आपको इंटरव्यू कर सकता है। मैंने अपने कॉलेज में इंटरव्यू करने के लिए जिसका एआई का हेल्प किया, क्योंकि मेरे को तो कंप्यूटर का नॉलेज ज़्यादा नहीं था, मेरे की फैकल्टी आती है क्या पूछूं, तो फिर वो एआई ने मेरे को पता ये सवाल पूछा और ये उसको एक्सरसाइज करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। Imagine how much power it is. You can examine people, you can find how good they are. You can yourself know how good you are. सबसे बड़ी बात तो होगी। अच्छा, ये एक्सरसाइज आप आगे करते रहना। Writing love letters and poems. You can even write letters, you know, love letter. Ask ChatGPT to, मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे ऐसे इसके साथ मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, और आई लव यू और यू जस्ट वांट टू शो योर ओन फीलिंग। ChatGPT will write a love letter for you. Isn't it amazing? Financial, it has also mental health checkpoints. मैं अपने डायबिटीज के सवाल ये है, डॉक्टर के पास फुली डॉक्टर 5 मिनट के रुपये, ये वाला नहीं चल रही है, ये डिस्टर्ब। मैं डॉक्टर के पास जाने के पहले एआई के पास जाता हूँ और एआई को बोलता हूँ मेरे को डॉक्टर ये दवाई दे रहा है और ये दवाई जो है मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर लेवल जो गड़बड़ रहा है, मैं क्या करूँ? तो मुझे बताता है बट इट टेल्स मी व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ईच दवाई। हर मेडिसिन का काम क्या है, कितना करना चाहिए, कितना, वो मेरे को कैलकुलेट करता है कि डॉक्टर से पूछना क्या होना है। कई लोग हिचकिचाते हैं डॉक्टर को क्या, डॉक्टर तो बड़े सर, और ऐसे डॉक्टर देखे मैंने रायपुर में, वो डांट दिया तो सवाल पूछो, वे सवाल पूछता है, मैं हूँ डॉक्टर। Here is able to evaluate आपकी disease, आपकी दवाइयाँ। Financial planning tools, investment analysis, small risk automation. बहुत से लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम लोग एक प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे स्टॉक मार्केट कि हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ फंड डालें, कहाँ फंड्स डालना अच्छा होगा। ये क्या होता है कि आपके डिसीजन से आपके इमोशन को निकाल देता है। आप जब कुछ करते हो ना, इमोशन पे करते हो। जब आप चिट्ठी भी लिखते हो तो इमोशन में चिट्ठी लिखते हो, झगड़ा हो गया, झगड़ा दिखाना है, फिर आपको तो झगड़ा निकाल के किसी से पैसे लेने की क्या करोगे, किसी से पैसे लेने क्या करोगे, उससे लड़ो।
प्यार से बात करो, जिससे पैसे मिले उसे प्यार से बात करो। आप लड़ सकते हो जिससे पैसे मिले, नो, लेकिन आपको गुस्सा है, आपको कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ये गलत है, आओ तो टेक अवे ऑल दैट फर्स्ट, इसका कोई फायदा नहीं है। It gives you a much better, it gives you a much more impartial, it gives you a much more effective. तो आपके रिलेशनशिप है अपने आप से नहीं सोच सकते। हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताया, कंपनी चाहे ये मैंने बताया। अभी एक्चुअली गूगल ने एक प्रोग्राम डेवलप किया है जो सिर्फ आई के स्कैन से आपको कई चीज़ बता सकता है। कई कंडीशन को कैंसर में डिटेक्ट कर सकता है, कई चीज़ें आपको बता सकता है, सिंपली लोग कर सकते हैं। एंड डोंट गो टू ए डॉक्टर हू डजंट बिलीव इन एआई। Go to a doctor who also believes in it, because one day I'm sure जो AI का एक्सपीरियंस होगा वो किसी भी इंडियन डॉक्टर से चाहता है। Don't believe. I'm not saying कि blindly believe it. I'm not experiment, see how it works. Be inquisitive. But start learning. इतने सारे टूल आने के मुझे कोई डाउट नहीं है मेरे माइंड में। The entire health sector will change. Entire health sector, the world is going to change. अभी वो नहीं होगा, आप कहीं भी हो, you are connected to command hospital. आप जहाँ जाते हो वो आपको बेसिक चेक करते हैं, आपके जो पैरामीटर्स को देते हैं और वो चले जाते हैं। तो हेल्थ कैन बी डिलीवर्ड। अभी हमको क्या होता है, जब हमको हेल्थ चाहिए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। अब हॉस्पिटल और डॉक्टर आपके पास आएगा। दैट इज अ चेंज दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। अभी मैं दिल्ली में था तो आई सॉ टाटा हेल्थ फॉलो का एक बहुत बढ़िया पॉइंट, बिल्कुल अगर मैं इसको अमेरिका ले आ सकता हूँ और एक अपोलो और का तो मैंने उनको बोला यार सब स्कूलों में आजकल वो बोर्ड बोलता है कि भाई एक सिक रूम रहो, सारे स्कूलों के पास सिक रूम है, किसी के पास कोई डॉक्टर नहीं, यूजलेस टीम है। एक तो हिंदुस्तानी छूट बहुत होते हैं आपस में ही एक दूसरे से अपने आप से, सबके पास वो है लेकिन वो तो ऐसे why would you put a sick room into AI technology? आपको कोई पैसा नहीं, एक नर्स है हमारी कनेक्टेड आपका हॉस्पिटल से और सारी के सारी हेल्थ डिलीवरी आपको। I'm telling you, health delivery system is going to change, its accessibility is going to improve, गाँव में भी लोगों को सही सकते हैं। अब गाँव में टाइम भी यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, nobody is going to care for that doctor. There is much more technology available, much more information available, much better health delivery services and you should know how to use it. मैंने बोला कि आप सारे सिस्टम डिजाइन करो, बट हम सिस्टम को यूज करें। अगर आज सरकार पैसे दे पूरे छत्तीसगढ़ में we can carry the health service to each and every block of the state. Is that the politician to be willing to spend? This one. ओके तो मैंने ये कहा कई बार कहा ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों ने बिलीव नहीं किया क्या है क्या करने गया है, जो बताता हूँ तो करेगा। मोस्टली गुड लोग तो यही है, ये है क्या करना है तो बताओ कोई तो करे। दे डोंट अंडरस्टैंड इट इज द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू द वर्ल्ड सो फार। इट्स अ टूल इट डजंट हैव विजडम। एआई कैन नॉट हैव विजडम। It can process billions of data, but it cannot feel the weight of joy. When you make a joy, as a human being, you realize what is the cost of joy. Share AI cannot do that. AI doesn't feel. AI is feelingless, He's just like a slave. But the next point I'm trying to make, end up delivering. और ये जो मेहनत वाला काम है, जो उठा के करने वाला काम है, वो सारा का सारा जो AI आपको सपोर्ट करता है। इंडिया में शायद नहीं, बट अमेरिका में तो आजकल वो एयर ड्रिवन कार्स चलते हैं, ड्राइवरलेस का कई जगह चलते हैं ड्राइवरलेस का। तो अगर आप बोल रहे हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ड्राइवरलेस का अबे आमा बता रहा है और क्वालिटी आ रही है सिम। और इससे क्या होगा कि लोगों के पास जो रियली एंजॉय करने की चीजें हैं, क्रिएटिविटी, डांस, म्यूजिक, ये सब करने के बाद कहीं आपके पास टाइम होगा। तो क्या है मॉर्निंग रोटी का खाना और रोटी कपड़ा वाला सवाल के लोगों के पास
But I believe that others will be more provided we deal with the air. If we don't deal with the air, radical equality through open house. Can you believe it now? बहुत से लोगों के पास में knowledge access ही नहीं है. They don't have access to proper. एक बच्चा जो गाँव में पढ़ रहा है, no access. बड़े शहर में है तो access है. लेकिन धीरे धीरे जो penetration बढ़ते जा रहा है, everybody could have access to proper, provided you have information. Zeal after donation. It will break the barrier of language, wealth, and wealth. मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ कि we are all. Can you all say no? No. कि wealth limited लोगों के पास, wealth का distribution equal नहीं. So क्या होता है? We are all face to face. We have to manage their ways. But AI will change that mindset. Amen. So, what is wrong with the society now? The society के साथ क्या होगा? What is wrong? एक तो inequality of opportunity. जो knowledge के अंदर वो अभी तक बहुत अच्छा है. अगर आपके पास knowledge नहीं है, फिर आपके आगे accept. So, this would reduce. ये मैं change करना चाह रहा हूँ, शायद आपको मानेंगे नहीं. जैसे कि एक्चुअली जल्दी बोल रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं होने वाला. Every child in a village in Chhattisgarh will have an AI mentor that is as capable as a professor of. ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है. गांव एरिया में कोई बच्चा रहता है, उसके पास एक्सेस है. You can talk to a very good professor who is sitting somewhere. तो वो जो एक्सेस, जो denial of access जो है ना, वो बता रहा है. From labor to meaning. मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड रिलेटेड अ वेरी गुड स्टोरी ऑन दिस. पर हमारी लाइफ में मेहनत से ज़्यादा मतलब मीनिंग, हम क्यों ही चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आता है. और ये बदलाव कई लोगों के आ चुका है, कई लोगों के नहीं आया. अभी भी वो लेबर इसको चेंज फ्रॉम लेबर टू मीनिंग. मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं? आप मैं जो कह रहा हूँ ठीक है? हाँ हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ. कोई भी समाज किसी को पूछ लीजिएगा तो बहुत सारे जो इम्पैक्ट है, ये जो आप लोग इनकम लेबर से कमाते हैं वो शायद चेंज हो गए. दैट इनकम विल कम टू यू समझ. एंड द इंफॉर्मेशन, द एंड ऑफ इंफॉर्मेशन chaos. अभी तो क्या है कि इतनी इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलरली वो आपके व्हाट्सएप में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सी सही है कौन सी. इस chaos का सेंस शायद ये निकाल पाए. मैं AI के पास जाता हूँ, पूछता हूँ कि 5000 साल पहले हिंदू फिलोसफर ने ये बोला, इंडियन फिलोसफर ने ये बोला, चाइना ने ये बोला, वेस्टर्न वाले थे वो ये कहते. तो आई एम ट्राइंग टू AI टू गिव मी एन आंसर. तो ये अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन chaos है, एक बिलीफ है. एक बिलीफ जो बिल्ड हो गया है, जो बचपन से बिल्ड हो जाता है, उसको आप दूर नहीं कर सकते. बट when AI goes, imagine now when AI goes to a small kid जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं का बेटा बच्चा है और इतने इंटरेस्टिंग सवाल है लाइफ में साइंस के पास कि उसको प्रेजेंट लेवल ऑफ नॉलेज को सॉल्व करना ही पॉसिबल. उस इंफॉर्मेशन गैप को चेंज करना, फिल करना बहुत जरूरी है. एंड AI में yeah, this is my favorite phrase. Be the faith to freedom. अभी तक हम लोग क्या फेक कर रहे हैं? कौन फेक कर रहे हैं? हाथ मारो. जो किस्मत में मिलेगा. और वही है. भावेश, why do you think fate? He is a professor in Chanakya Academy, so I asked him. Why do you feel fate is? सर आप इतनी कोशिश कर लें, अगर साथ ना कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट 1%. ओके, कितने लोग इस आइडिया को बिलीव करते हैं? तो मैंने कही आप बढ़ कर रहते हैं. थैंक यू. और कितने लोग होते हैं कि कितने लोग होते नहीं
फेट से तो फ्रीडम मिल जाएगा, मेहनत करूँगा, करता जाऊँगा तो फेट की मैं कर पाऊँगा कुछ। है कोई स्किल? हाँ, चलिए बहुत डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। और दोस्त हु आर इंटरेस्टेड क्या करें इंग्लिश, क्योंकि इस क्लासरूम में ये सवाल जो है ये इतना डीप सवाल है, मेरे पास काम से पहुँच रहा है इसको। और मैं कोई गुरु नहीं, मैं गुरु नहीं जो बोलता है कि मैं भगवान हूँ। है ऐसे गुरु, एक गुरु है वो चला गया पता नहीं उसने वर्ल्ड में कोई एक आइलैंड खरीद दिया और बोला इस आइलैंड का मैं राजा हूँ। एंड दे आर वेरी लर्नेड पीपल फॉलोइंग, वेरी लर्नेड पीपल है ऐसे जो गुरुज हैं जो डिविनिटी को क्लेम कर रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो गॉड हो रहा है। आई डोंट बिलोंग टू दैट क्लास, बट ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। भविष्य ने ये कहा कितनी भी कोशिश कर लो भविष्य, बट विल इट मेक सम डिफरेंस, सम कोशिश। अगर कोई कोशिश बिल्कुल नहीं करता तो क्या होगा? कुछ तो कोशिश करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कोशिश बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा वो भी करना पड़ेगा, भगवान चाहेगा। हाँ, कुछ कोशिश जो है वो आप करोगे या कोई और करवाएगा? कोशिश मैं करूँगा सर, मगर There is a freedom to freedom. You are believing that you have some freedom. Some freedom, but it's unlimited. Okay, that's why that. So, आज के दिन पे information is a gatekeeper. अगर आपके पास information है, तो और आपने information का गेट बंद कर दिया, ऐसे लोग हैं कि नहीं? जो information बंद करते हैं बहुत से लोग, लाइसेंस कैसे लेना है वो नहीं बताएगा आपको, टिकट बुक करनी है नहीं बताएगा आपको, उसको पैसा मिलता है। Information is actually a gatekeeper, it's nonsense. If you cannot break that, निकल गए। तो ये इंफॉर्मेशन मैं मानता हूँ इस बात को। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही गलत है तो क्या करना? अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही तो क्या करना? और अभी तक क्या है, इंफॉर्मेशन डिनाई थी बहुत से लोगों को। I don't want to create a controversy, but कि तुम नहीं मने में नहीं घुसोगे, तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो देना ही करोगे। Poor people particularly. You are keeping information against जब ये निकल जाएगा, फिर आप सोचो ये दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी? AI provides us with near infinite knowledge. We use this knowledge not to predict our fate, but to engineer success. हम अपनी सक्सेस को इंजीनियर कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक, चांस, अपॉर्चुनिटी मैटर करती है। कई लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कुछ, पर कहीं पे अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप मेहनती हो और आपने उस अपॉर्चुनिटी को साइड कर दिया, मैं तो देखता हूँ कि कैसे कैसे लोग कहाँ से कहाँ किया। अब्राहम लिंकन क्या था, क्या बैकग्राउंड है? There are a lot of very poor people. अदर दिन में सुंदर था हल्दीराम जवान, वो कहाँ से शुरुआत हुई? He was selling just 100 kilograms of chia. And over 30-40 years he got a brilliant. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, so many of them actually, इतने सारे एग्जाम्पल। तो प्लीज ब्रेक है Destiny is for those who wait, design is for those who act. Let the machine provide the knowledge, let the human heart provide the direction. ये चीज बहुत जरूरी है। कुछ तो क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल नहीं, क्या हो जाएगा? गलत हाथ में रहे कौन क्या? एक चीज का तो मेरा है कि one day AI can become God. अभी जब आपको कुछ समझ नहीं आती तो भगवान को छोड़ दो, भगवान की माया मान जाओ। अब आप यही तो समझ नहीं पाओगे, तो यही बनने से कुछ बिगड़ पाओगे, क्योंकि all of us are not able to decide कि ये के पीछे एक क्या होगा, ये के पीछे क्या कितनी मेहनत सालों साल कितना बिलियन डेटा रखते हैं और कितना डिफिकल्ट होगा ये बात, कितने लाखों लोग हैं
research and life, they are the people who need the resolution, not the immediate politician. They are the ones who need. They are the ones who know what they do. They are the ones who are providing me and you the policy to write, to do well. Okay, next. Okay. So मैं हमारा क्या गोल है? एक अवेयरनेस और एक्सेस गोल है। हम चाह रहे हैं कि लोगों को एक्सेस करें। हम लोग एजुकेशन थ्रू एजुकेशन स्कूल मॉडर्न स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म करता है। We have an education institution, but we do want to do a little research so that we can solve some problems. Okay, I don't believe in those leaders who don't solve problems. I don't believe in those who don't do the field. They are useless leaders. A good leader is one who solve the problem. He can say, this is how to solve. Okay, next. So we have right now we have gone to some program. 6 महीने का हमारा एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 12 महीने का पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है। दिस इज वेरी टीच एजेंटिकेट क्लास। 9 महीने का है हमारा वर्किंग विद कंपनी जो है एआई और 8 सेशन का प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एडमिशन ओपन टू एनी ग्रेजुएट। अभी फी 90,000 के है बट दिस में चेंज देन बेसिकली स्किल टू यूज जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एजेंट डाइवर्स एजुकेशन। नेक्स्ट तो 6 महीने के सर्टिफिकेट में ये सब सिखाएंगे हाउ टू फॉर्म। जब तक आपको ये नहीं आएगा कि मैं सवाल क्या पूछूं, ये कैनॉट हेल्प। आपको एक को ये सवाल पूछना होगा कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट है, ये सिचुएशन में अप्लाई क्या करो। अगर आपने सिचुएशन में अप्लाई किया तो उसका जवाब कैसे है, पर अगर आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया कि क्या कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर, तो मैं चाहता था कि मैं टॉप में if you can dig in your social digital marketing, image and certification. So next, software we are छोटी सी कर जाते हैं और 5 साल का हो जाए बेसिकली 30 साल का यही करना चाहते हैं। They invest see how it helps. We have a program AI and business. We are running this program there for many faculty all over the world. एक फायदा ये हो गया कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है, लेकिन we don't believe in merely online. We are hybrid. Hybrid का मतलब थोड़ा hybrid. Next, we propose to learn AI and 11 के बच्चों के लिए मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था सेवा में पढ़ता था, इतनी गंदी हमारे पास में फिजिक्स की लैब थी, मुझे शर्म आती है कि वो लैब में हम लोग फिजिक्स पढ़ते उस समय के फिजिक्स केमिस्ट्री ये इतने डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं लाइफ साइंसेस में, तो हम लोगों को वैसे कोई भी ऑल ऑफ अस लैंडेड अप नहीं, नन ऑफ अस डोंट प्योर साइंस कोई इंटरेस्ट है। तो एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पॉसिबल है। हम लोग सब कुछ कैन थ्रू वी वांट टू ब्रिंग दैट, वी वांट टू इम्प्रूव द लर्निंग। नाउ वी हैव ऑलरेडी a few projects here running the supply chain for all. ये उसकी सेल प्रेडिक्ट करना चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट्स की सेल क्या होगी, तो वो किस तरीके से इतना वो ऑर्डर करता है, क्या वो उसके वेरिएबल्स के हाथ में कुछ नहीं करता, ये सब पॉसिबल है। ये मैं कोई हमारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं यूज इंडस्ट्री मॉडल एडवाइजरी सर्विसेज और फार्मर इस भी हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर के हैं, तो हम जो फार्मर से क्या समस्या है, कहाँ से इनपुट सस्ता में और कहाँ अपने माल को हायर रेट में बेच सके। तो फार्मर कैसे हो, वी वांट टू गिव द टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ कॉमन। ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए या एकदम एजुकेटेड लोगों के लिए सकते हैं या नो हो गए आप और जो हमारा दूसरा का जो बोल रहा है फ्लायर्स को
तो आप फायर को भी वापस कर जाते हैं, उसकी वॉशिंग ये वॉशिंग एंड वॉश आउट को तो 95% मेरे गोल ऐसा कुछ हो सकता है इस चीज़ के बारे में जो उस ऐश को कलेक्ट करे एंड देन इट कैन बी कन्वर्टेड as paints or something or colors, charcoals kind of stuff where we can use it. I'm a visual artist also, so I make my own paints. So I was using those ashes for my painting. So I was thinking about it, how we can collect those waste and convert it into paint. क्योंकि हम paint के लिए alternative black, different pigments use करते हैं. So we create canvas stuff. Why cannot we can recycle that into that stuff? That was my concern. What I just asked to be इसके बजाय क्या हम उसको solidification में collect कर सकते हैं rather than throwing away the metals. That was my goal. तो ये दो अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास, दो अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं. एक तो फ्लाई ऐश की आपको फ्लाई ऐश की साथ साइज की बात है. दूसरा क्या है कि एक जो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि तो भोजन में फ्लाई ऐश का प्रभाव कम, तो उसे हीट कर कम करता है, उसे बिजली कम करता है. और आप फ्लाई ऐश को लेके जाते हो या गवर्नमेंट यहाँ है 1000 का जो आपको बात, तो वॉशिंग कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले से आ रहा है. क्योंकि जो ऐश करते हैं उनका ऐश करने निकलेगा तो आपको काफ़ी मिलते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट आया तो अभी वॉशिंग जो है वो 95% निकाल दिया. तो अभी कोशिश हो रही है कि 98%. अभी तक जो ह्यूमन बीइंग की एफर्ट है वो 95% पे पहुँच गया है. और मेरा सवाल है कि शायद मेरी उम्मीद है कि हम लोग उस समय के बाद वो लोग कुछ प्रॉब्लम को ये ठीक है. મને આગળ જાઉં છું. काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको अडॉप्ट करके उसको किसी पे बिल्ड करें. क्योंकि तो कई एग्जाम्पल होगा वो क्यूमुलेटिव नॉलेज से हम लोग ये दो अलग चीज़ें हैं. और एज को पेन में कन्वर्ट करना है. I was just having an idea कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में से वाटर में फ्लो कर देते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का कैसे, बट हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि उसको पानी में न डाल के उसको सॉलिडिफिकेशन में कंजर्व करके उसको जमने से ज़्यादा सवाल जमने में कुछ के नाम आवाज नहीं आ रही आवाज वगैरह. इसका एक सोल्यूशन है ग्रीन हाउसेस, जस्ट लाइक इन स्पेन, फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज द्वारा नियर टू मेडिटेरियन सी. तो उसमें क्या खारापन बहुत ज़्यादा है. सो वो लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि वो उसको रिसाइकल करते हैं बार बार. जैसे आप बोल रहे हैं कि सर बोल रहे हैं कि अगर उसको हम वॉश करते हैं तो वॉश के साथ वाटर के साथ हम टैंक्स में उसको फिल्टर करके उसको रिसाइकल कर सकते हैं. दिस इज सोल्यूशन, दिस इज ऑलरेडी देयर, बट इन इंडिया वी आर नॉट फॉलोइंग दिस. दिस इज द प्रॉब्लम. हम ज़्यादातर उसको वाटर के साथ वेस्ट में करते हैं. यस, आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, बट सोल्यूशन. So we also want to develop a digital marketing service for women and तो छत्तीसगढ़ में women हैं जो प्रोजेक्ट चला रही हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो digital marketing. Our effort, we have the AI Foundation, we have to find money, somebody has to pay us. We are, by the way, this is the first attempt in Chhattisgarh where individual BBA is in design education
well tempered with them. I've told the university vice chancellor, 75% post is lost, 25% is lost. We want to give an element of AI. क्योंकि आजकल तो लोगों की जरूरत नहीं होती और इमीडिएटली आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है. एजुकेशन has shifted from information to action. अभी एजुकेशन क्या है, मैंने आपको सब सारा सब भाषण दे दिया. I told you, but information we want to get the information in a way to see that we can learn and understand. So then we change the and then we want to work with some of the national organizations. We already have one of the training. By the way, I was surprised. Bangalore में यूनिवर्सिटी है, इनपे उसमें मीडिया का 170 करोड़ का इन्वेस्टमेंट. When I met the department, he said, "इस हमारे साथ ऐसा है कि we'll give you a health statement और आप उसमें रिसर्च करिए, आपको सारे के सारे एक्सेस जो है इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तभी ये कोलैबोरेशन अभी भी काफी here is actually no open. यहाँ पर आप कर रहे People are willing to. I was surprised. 175 crores, a private university, saying they're offering, let's work together, give you the access, but they don't have a doctor who is interested, get into a particular field and see if you can find it. So now, this is my last slide. I am making an appeal, join it. As a student, researcher, faculty, domain expert, volunteer. Kitni volunteering possible? I am ashamed that we don't solve our problems. मैंने एक चीज अमेरिका में देखी, स्कूलों के सामने से जब बस निकलती है तो पेरेंट आ जाते हैं और बस में चलते हैं, माने बच्चों कारों नहीं चलते रोक देते because the student is crossing. So as long as the student is crossing, they will stop the entire and all the level. हमारे यहाँ वॉलंटियरिंग का मतलब कुछ और ही है. हम वॉलंटियरिंग से अपने खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ये कल्चर है, मैं शायद कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत दिखता है वॉलंटियर. I firmly believe that if I can change the mindset of people, take charge of your own destiny. Even though I am not denying knowledge, हमारा destiny हमारे किसी हाथ में नहीं है, शायद पार्टी है. But take charge, believe in yourself. You can trust yourself. Look for a solution. Be respected by your friends. बहुत से लोग नहीं आए, बड़े मुश्किल से 100 लोग यहाँ हैं. And Alka very Alka is a marketing head, so even if you want to know further about the course, don't know more about it. And I want to use this platform by saying that you learn and work. Thank you. Okay, sorry. Yes, question. Now, it is of course a software because सारा जो भी AI को ट्रेनिंग हुई है, AI की एजुकेशन हुई है, मशीन लर्निंग, ये लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स, ये लाखों लोगों का काम है, लाखों हजारों लोगों ने so please be answer the question and it is not one and all. Okay, very nice question. So, एक तो सोर्स क्या है कि whatever information available all over it,
software development. तो मेरा सजेशन भी टू रीड ऑल द लॉज. जब लॉ पढ़ने का तो सारे लॉ अगर होंगे इंटरनेट पे तो रीड कर लेगा. AI कैन रीड एनीथिंग इन एवरीथिंग. आप जब गूगल के पास जाते हो सर्च करते हो गूगल से सब देखोगे. But AI is able to look at everywhere. These are all large language models. Same here. Even large language model जो है, large language model बेसिकली कि वो वहीं से पढ़ता है, वहीं से इंफॉर्मेशन करता है. अब क्या होता है कि आपके इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक आती है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहते. You don't want to give your data to some other guy. यही सवाल होता है कि हम इंडियन जो है डेटा हमारे पास में क्यों की जरूरत है. मैक्सिमम है डेटा हमारे पास. So now the question is that you have to create another model which is known as model, and then people have developed a specific area thinking that okay, you will be able to solve different kinds of problems. So information has to come from somewhere. Now if I don't have any data, जैसे मेरे दिमाग में एक सवाल है कि आप छत्तीसगढ़ में ग्रोथ मॉडल क्या हो. छत्तीसगढ़ में ग्रोथ कैसे हो. जब तक मेरे को सरकार ने डेटा नहीं देगी कि ये कहाँ पे कहाँ ये पहुँच है, कहाँ पे किस स्टेट पे ग्रोथ हो रही है. जैसे मेरे दिमाग में थिंकिंग है 6-7 बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई है, तो वहाँ उधर सुविधा आ गई है. उसके अराउंड जो 15-20 के जो लोग हैं उनको यहाँ पे जॉब है. But I think this is entirely driven by data. अगर डेटा नहीं तो है, this is that. So data analysis. मतलब कहना बहुत सारे जो पर्सनल टेक्निक हैं, मैनेजमेंट पर्सनल और चीज़. तो सर आपके जो 6 मंथ का जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोर्स की क्या स्ट्रक्चर क्या है. आपने बताया मैंने वो प्रोग्राम ऐसे रखा है कि बहुत से लोग एजेंट का मॉडल प्रोग्राम के लिए जो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजना चाहिए. और यहाँ पे आपको फिल्म बनाना है टूल्स है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है टूल्स है. मैंने भाई इतने अच्छे डिज़ाइन बनाया है. मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, बट आई कैन क्रिएट डिज़ाइन पैसे. बिकॉज मैं उनके पास जाता हूँ, कहता हूँ कि ये मेरा मैसेज है, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरा एफर्ट है, तो क्रिएट और एक बार 2 बार 3 बार 4 बार इतनी अच्छी हम प्रॉम्प्ट हो गए. तो शिवलिक आइडिया ये है कि हम गूगल की मदद ले सकते हैं. उसके बाद के लेवल में जो है आपसे नेक्स्ट मेरा एक संचार मैं आपको पढ़ता हूँ तो मेरे को बोलता है सब जानता है बोलता चाणक्य का क्या करते आई डोंट नो क्या करेगा who is interested in the work. But AI didn't data. जब AI को डेटा तो मैं वो नहीं करेगा तब वो सॉल्यूशन निकालेगा. तो मुझसे पूछेगा कि मैं डूइंग गुड, मैं केवल देखो चीज़ नहीं डेटा को किसी और को भी प्रोवाइड कर सकते हैं. Your data is not known. Like my data, but I don't care. Somebody knows that I have it. So on. Somebody knows that I'm trying to run it. So on. Somebody knows that I'm trying to do something good. So on. So, but at the same time, certain information is bad. You will not want, you don't want a particular kind of disease or something which anyone else. There is something private in our life. मैं हर चीज को नहीं करता. तो इवन ऐसे बहुत कुछ है. बैंक अकाउंट आप शेयर नहीं करते क्योंकि पता नहीं कौन निकाल कर ले जाएगा. एग्जैक्टली. जैसे मैं अगर फाइनेंस के बारे में सोच रही हूँ तो इट माइट पॉसिबल कि कोई और इस चीज़ को पकड़ सकता है कि अभी मैं फाइनेंस के बारे में सोचूंगी. You should be watching what you share. What is I don't think it is very present or I don't think मेरी मतलब पासवर्ड ये I don't share that. पर जो लोकलाइज मॉडल है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉडल, जैसे मुझे चाणक्य अकेडमी हर चीज को
करना है तो चाहते हैं कि I can't share the data of somebody, I can't share her data of somebody without her permission. So there is a law that is some data can be shared, some cannot be shared, and it's purely based on it. आपको कुछ दे भी रहा है वो, अगर आप उसको नहीं दोगे तो देगा कैसे आपको? AI जी में वो कुछ नेगेटिव बनाकर अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए हमें माइंडसेट चेंज कर सकता है। AI के माध्यम से कोई कंपनी हमारे माइंडसेट को चेंज कर सकती है नेगेटिव बनाकर और देयर बिजनेस इंटरेस्ट। हाउ टू यू शुड अवेयर अबाउट दैट। नहीं देखो ऐसा है कि एक तो स्टार्ट मीटिंग किया, स्टार्ट आस्किंग किया 100% करते हो कोई गलती। मैं किसी को सजेस्ट कर रहा था कि हाई प्रोटीन पैकेज फूड इंडस्ट्री, तो मैंने ऐसे पूछा क्या हाई पैकेज प्रोटीन बना, तो उसके बाद मुझे फिगर आउट क्या मशीन चाहिए, कहाँ चाहिए, कौन सा है, क्या कॉस्ट है, वो आपको एक फाइनली बोल रहा है। मैंने मुझसे पूछा कि मेरे को बैंक से लोन चाहिए, वर्किंग करते तो उसके मुझसे बहुत से सवाल हैं कि भैया क्या क्या तो मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस में आपको सारी कभी नहीं मिल सकती, 100% इंफॉर्मेशन तो आपको कभी नहीं मिलती। तो क्या होता है जब आप बिजनेस करते हैं तो यू वर्क इन एंटिसिपेशन विद एक्सप्रेस और ये नहीं कि है इसको क्रिएट करना बट तो अगर आप कर रहे हैं बिजनेस आज के डेट में कर रहे हैं शुरू से एक्सप्रेस नहीं आपको नहीं है फिर मैंने रिजल्ट की बात अल्टीमेट डिसीजन अगर आप नए टूल पर इतने सारे मैं आपसे कह रहा हूँ हेल्थ के कितने प्रॉब्लम सिर्फ आपकी आइज को देख के अगर कोई बता दे कि आपको पब्लिक मेरे को नहीं था ये तकलीफ होना जब उन्होंने लाखों आइज को स्कैन किया फिर देखा कि उन्हें तो दे फाउंड सब काटा तो मेरा इशू है बट प्रोग्रेस ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि हम AI को अपने स्मार्ट वर्किंग के लिए और अपने ग्रोथ के लिए इनमें यूज़ करना चाहिए। empowerment, self-growth, removing confusion, removing empowering and okay, thank you. Thank you. So much, sir, for such an insightful session. We now move to a special video presentation. This video is by Sameer Ranjan, an AI entrepreneur, technologist, and a global innovator based in Dallas, USA. From being a silver medalist at NIT Raipur to building a scale global AI ventures, his video journey nama. spans enterprises, AI, talent intelligence, agentic system, and AI-driven platforms. With global impact, this truly reflects how Indian talent is shaping the global AI ecosystem. Let us now watch the video presentation by Sameer Ranjan. Right before speaking anything and introducing me, because I want you to listen to this very carefully and understand the implication of changes that are coming your way. We all saw a world that is rapidly changing, and we are, in fact, some of the changes are at a very granular level. I live in USA and was born and brought up in Billai. Whenever I come back to my state
whenever I come back to India, I see something which is very fascinating. Every single place where I go and I want to spend something, I see a QR code. I can scan it and pay the money. Whenever I go somewhere and talk to them about AI, they are factual, they are interesting, and they are somewhat understand what AI is doing for them. Be it as simple as ChatGPT generating email or as complicated as Claude generating code for them. India is working really hard to make a mark on AI. But the biggest question is, are we all working toward the same goal, or are we too segregated to understand where and what we need to achieve? Now, this is the most important time in the decade that we will get, where we can define how the whole situation and the country and our future will look like. Why? Because business idea generation, business idea validation has become easy, and everybody now have access to the technology that is very future looking. So if you are someone who has not been working towards making yourself successful, you might be losing a chance to create something which most of the people in the late 90s created here in the States. This opportunity comes once in a lifetime. Why? Because AI is not just technology, AI is people also. AI needs a lot of talent to work on the actual technology so that we can create something of value. And when I say value, I just don't mean money. Money is the easiest component and every single person can learn to earn it. Or as we have seen in the entirety of the world, if you have enough land, if you have enough gold, you have enough money. But money is not the end goal here. End goal is, are you creating something that will serve the humanity for a larger good? Are you someone who is looking to get a newer method by which you can change the traditional settings? Are you someone who is brave enough to challenge the system which has never been challenged before? And if you are these person or these quality people, you are at the verge of creating the history. The only one thing which is missing from your argument is you might not know what you exactly have to do. And if you know what exactly you have to do, you might not have resources to do that. And even if you have resources and you know what to do, you might not have the right guidance. And this is where a lot of sharper minds are coming in for trying to help you get the right guidance, to get the right armory, so that you can be someone who can go and win, and not just win, but win big for the generations to come. I come from a background where I was lucky enough to get quality education from the quality institutions, be it my primary education centers, be it my college, which was in Raipur, be it my advanced degree colleges, which was Dallas and Stanford. Every single place gave me something which was in addition to what I have already known. But at the same time, it also gave me a platform where I can go and launch my companies. I can take it to multi-million dollars and sell it to the larger ventures so that they can shape it into much better product. I have worked in health tech, med tech, HR tech, ed tech, and manufacturing tech also. And I came from a background which had nothing to do with coding at all. But I was able to upskill myself because I saw the opportunity, I got the guidance, and I was ready to act towards those guidance. So if you are someone who likes to listen, who likes to follow, and then create a personality who will be leading someone in the future, you need to do something about it as of today, which is get upskilled in the right technologies. My mentors can help you shape your future and think how much value you can add back to the society. Because really, we are at one thing for society. If we are creating solutions, we are creating products, we are creating ecosystems that match our society, there is nothing more less for that. With that, and thank you so much for listening. And I hope you all we will take this initiative, making AI for every single person's answer. What is question for? Thank you so much.
Now we take a short tea break. It's been arranged for you. Let's hit ODS. Right behind you. Please proceed to the back. क्या करना